बंधूंनो, भगिनींनो आणि मित्रांनो, मी रवींद्र चौधरी आपणा सर्वांना अभिवादन करीत आहे. आज आपण दुर्गा सप्तशतीमधील चौथ्या अध्यायाचे संस्कृतमध्ये पठण करणार आहोत. हरिः ओम. ओम नमः चंडिकायै. ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै नमः. अथ श्री दुर्गा सप्तशती अथ चतुर्थोऽध्यायः. ओम खालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखिमपि करैरुद्रुहन्ति त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनखिलं तेजसां पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गा जयाख्यं त्रिदशा परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः. ओम नमः चंडिकायै. ओम ऋषिरुवाच. शक्रादय सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुवुः प्रणति नम्रशिरोधारांसा वाग्भी प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा देव्या यया तत्मिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगण शक्तिसमूहमूर्त्या ताम् अंबिकाम् अखिल देवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सानः. यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहर्ष नहि वक्तुमलं वलञ्च सा चंडिका अखल जगत परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु. या श्री स्वयं सुकृतिनां बहुनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवत्सलज्जा तां त्वां नतात्म परिपालय दिवि विश्वम्. किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भूतानि सर्वेषु ते व्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रया अखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयातु सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिर्हेतुरुच्चार्यसे त्वमत एवं जनैः स्वदा च. या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यसे सुनीयेतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी. शब्दात्मिका सुविमलर्गिजूषां निधानमुद्गीतरम्यपदपाठवता च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्थिहन्त्री. मेधासि देवी विदिता अखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारी हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा. ईशतः सममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारी कनकोत्तमकान्तिकम् अत्यद्भुतं प्ररुमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण. दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराल मुद्यश्च शाङ्कसदृशवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जिर्विते हि कुपितान्तकदर्शनेन. प्रसीद परमा भवति भवाय सद्यो विनाशेऽसि कोपवति कुलानि विज्ञातमेतद्धुनैव यदस्तमेतन्नित्यं बलं
सुविकलं महिषासुरस्य। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदा अभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। धर्माणि देवी सकलानि सदैव कर्म ण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति। स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्तैः स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणी च का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा रचित्ता। एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्। संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयातु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी। दृष्टैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरीषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम्। लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी। खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम्। यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्। दुर्वृत्तशमनं तव देवी शीलं रूपं तथैतदविचिन्तं तुल्यमन्यैः। वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणां वैरीष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम्। केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिपुत्र। चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवी वरदे भुवनत्रयेऽपि। त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा। नीता देवगणं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकम् उन्मादं सुरारिभवं नमस्ते। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके। घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च। प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे। ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते। यानि चातर्थ्यघोराणि तैरक्ष्मांस्तथा भुवम्। खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि ते अम्बिके। करपल्लवसङ्गीनि तैरक्ष्मान् रक्ष सर्वतः। ऋषिरुवाच एवं सुतासुरैर्देव्यै कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः। अर्चितां जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः। भक्त्या समस्तैर्स्त्रिजशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता। प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान्। दिव्यवाच प्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तो अभिवाञ्छितं। देवाऊचु भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते। यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देवस्त्वयास्माकं महेश्वरी। संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेता परमापदः। यस्य मर्त्यः स्तवैरेभिः त्वां स्तुष्यत्यमलानने।
तस्य वित्तर्भिर्विभवैर्धनधारादिसम्पदां वृद्धये अस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूर्वान्तर्हिता नृप। इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी। पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणी। तच्छृणुष्व मया ख्यातं यावत् कथयामि ते। ह्रीं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादिस्तुतेर्नाम चतुर्थोऽध्यायः। असो झालेली पठण सेवा श्री दुर्गा मातेच्या चरणी समर्पण करतो आणि पाठ करताना काही चूक झाली असल्यास मी देवीची क्षमा मागतो। क्षमस्वापराधम क्षमस्वापराधम क्षमस्वापराधम। मी रवींद्र चौधरी आपणा सर्वांना नम्र विनंती करतो की आपण माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।